Are you the one who likes psychology? No? Yes? Okay. So guys, welcome back to my channel. My name is Komal, and if you're interested in new informative vlogs, so please subscribe my channel because I post every Saturday informative vlogs, and who knows, one day it might help you as well. So welcome back. आज की जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट recreation therapy program in Canada. So guys, most of the students they don't know about this program, how many semesters this program has, what is the fees, what are the career option, what places can we work for after doing the recreational therapist course. सबसे पहले बात करते हैं कि recreation therapy होता क्या है, या फिर अगर आपने कभी activation aid सुना है या नहीं भी सुना है. So what is this activation aid? Yeah, what is recreation therapy? What they do? What are the therapists? What they do exactly? So उनका जो काम होता है is basically to make a difference and to improve others' life. एंड नाउ ये जो अदर्स वर्ड है, हु आर दोज अदर्स जिनकी वो हेल्प करते हैं, जिनकी लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट लाते हैं, हु आर दोज क्लाइंट्स. सो इट डिपेंड. ओके, सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर आपने चाइल्ड केयर ट्रीटमेंट सेंटर सुना है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चिल्ड्रन होते हैं जिनको या तो थोड़ा लेट समझ में आता है या फिर कुछ छोटी मोटी एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं. उनको जो हेल्प करते हैं हर चीज़ में, धीरे धीरे कोई भी एक्टिविटी कराना या कुछ सिखाना, या फिर उनको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है उसमें जब हम किसी की हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टिवेशन एड्स, वॉलंटियर्स, कोऑर्डिनेटर्स. सो दिस वाज द वेरी बेसिक एग्जांपल टू एक्सप्लेन ये गाइस. आई होप अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. टॉक मोर अबाउट this course, this program in this video, and what are the career related to this program, which places you can work for, what are the job titles, how you can get the job. So we will talk about everything. So the formal name of the course is recreation therapy. अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि recreation therapy कौन कौन से कॉलेज में है, ओंटारियो में या फिर कनाडा में, so the course name you have to put is recreation therapy. And the duration for this course is 4 semesters, that means around 16 months. एंड द फीस फॉर दिस प्रोग्राम विच इज़ द लोवेस्ट, मैं आपको लोवेस्ट से स्टार्ट करके बताती हूँ, डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज, इज़ $14,000 कैनेडियन डॉलर्स फॉर 1 ईयर. सो एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, आप कौन से कॉलेज के लिए ढूंढ रहे हैं. बट फॉर दी colleges in Ontario like Durham, Seneca, Centennial, and St. Clair, it starts from $14,000. And you can take this course after doing 12th. You don't have to necessarily be the graduated student. आप ये 12th के बाद भी ये कोर्स लेकर आ सकते हैं कैनेडा. सो गाइज, अब हम करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि आप ये कोर्स करने के बाद कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो. सो यू कैन बिकम एन एक्टिवेशन एड, एक्टिवेशन कोऑर्डिनेटर, रिक्रिएशन थेरेपिस्ट, exercise therapist, life creation manager, activity coordinator, long term care. So these are the few career options जो कि आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, या फिर आप ये कोर्स कभी भी इन फ्यूचर में लेना चाहते हो. तो यू कैन गो टू दीज स्पेसिफिक जॉब टाइटल्स and you can start your career. Work for community treatment centers, community organizations, home-based agencies. You can work for retirement plans. You can work for your private classes. So it depends कि आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो. एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर रिक्रिएशन कोऑर्डिनेटर और एनी रिक्रिएशन थेरेपिस्ट जॉब, अगर आप रिक्रिएशन थेरेपिस्ट से नहीं भी स्टार्ट करना चाहते एंड यू आर इन अ प्रोग्राम, और आप एक स्टूडेंट हैं, आप वॉलंटियर करना चाहते हो या कोई इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो यू कैन अप्लाई ऑन दीज जॉब बोर्ड्स विच आर ग्लासडोर, वर्कोपोलिस, इंडीड. ऑल्सो यू कैन अप्लाई ऑन जॉब बैंक. एंड आप अपनी लोकल या फिर प्रोविंशियल हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं. एंड यू कैन वॉक इन फॉर श्योर, देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग वॉक इन. सो गाइज, आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा कि आरटी बनने के लिए आपको कौन कौन से जॉब टाइटल्स के लिए सर्च करना है, एंड आप कहाँ कहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हो, व्हाट इज़ द प्रोग्राम नेम, हाउ मेनी सेमेस्टर्स इट हैज़, व्हाट इज़ द बेसिक फीस टू स्टार्ट विद. एंड ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ द बेसिक सैलरी टू स्टार्ट विद फॉर आर टी, टू बिकमिंग एन आर टी, और अगर आप आर टी बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, सो द बेसिक सैलरी इन कैनेडा वुड बी फॉर द स्टार्टर्स इट्स अराउंड $18 to $25.
अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर मोर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। अब हम बात करेंगे रेज्यूम। अगर आपने रेज्यूम बनाना है, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या क्या स्किल्स डालनी है या फिर आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है रेज्यूम बनाने के लिए, सो आई ऑलवेज रिकमेंड कैनवा। अगर आप कैनवा पे जाके देखें तो बहुत सारे there are the templates for the resume. Choose any specific simple one, very simple, not anything कलरफुल और जिसमें इमेजेस हो। आपको कोई इमेज नहीं डालनी है अपने रिज्यूमे में, इट शुड बी जस्ट बेसिक, स्टार्टिंग विद द ईमेल आईडी, योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर नेम, एंड देन समरी ऑफ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एंड बेसिकली जो भी आपके हाईलाइटेड एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू पुट योर फोटो, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एड्रेस, नो नथिंग, ओके। एंड देन आपने जब एक टेम्पलेट, कोई भी सिंपल टेम्पलेट चूज कर लिया, देन यू हैव टू पुट द रेलिवेंट स्किल्स। नाउ रेलिवेंट स्किल्स मतलब जो भी जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ ट्राई करो कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड आपका रिज्यूम 80% मैच करता हो, तभी वो आपका रिज्यूम पिक करेंगे एंड दे विल कॉल यू। एंड मेक श्योर आप कभी भी आरटी के लिए, रिक्रिएशन थेरेपी के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये स्किल ज़रूर डालें। दैट यू हैव एक्सपीरियंस वर्किंग विद वल्नरेबल पॉपुलेशन, यू हैव कम्युनिकेशन एम्पैथी, या फिर अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस है 1 या 2 दिन का। एंड अगर आप कोई भी आरटी की जॉब अप्लाई करते हैं तो कवर लेटर इज़ मस्ट, जिसमें आप ये 3 चीज़ें ज़रूर स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट, why you are interested for this role. Second, why you are the best fit for this role. Third, what is the strength of yours to handle this job role profile. Also, you have to mention that how you are the best to handle any kind of situation, and you will make sure that environment is positive, with including the example what is the biggest motivation of yours to become an recreation therapist. So this is how you will make your resume plus your cover letter, and it should be very strong. It should be highlighting that how positive you are and how you can handle any kind of vulnerable population. So after first step is resume making, that is done. Second step is cover letter, that is done. So third step is interview preparation. एंड बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में किस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम तैयारी करें। सो इट्स वेरी इजी, जो भी जॉब रोल आप अप्लाई कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे जाके आप लिख सकते हो कि आप ये वाले रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो एंड व्हाट आर द 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन दिस रोल। एंड जो भी चैट जीपीटी आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मिरर के सामने आप वो 10 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आई विल नॉट से कि आप याद कर लो आंसर्स को, बट जस्ट आपके दिमाग में स्किल सेट होना चाहिए, आपके दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे बोलने हैं, ताकि वो एक तरीके से जेन्युइन लगे, नेचुरल लगे, एंड ऐसा भी लगे कि आप ऑलरेडी एडवांस में प्रिपेयर हो एंड आप पॉजिटिव कैरेक्टर रखते हो। फॉर द आरटी रोल, आई विल सजेस्ट यू टू प्रिपेयर। फर्स्ट इज you should definitely understand the basic work of what activation aids do, including therapeutic value of recreation. Secondly, you should be aware of different type of activity that might be used in different kind of therapy. And lastly, you should know that how these activities helps in improving physical, emotional, or social well-being of the client. So the first question an interview might ask you is, tell me about a time when you had to assist someone with a disability or illness. How did you handle it? You can pause the video here and you can practice कि आपने कैसे assist किया किसी भी disability person को, or the person, someone with an illness, any kind of illness. Second question, they might ask you, how do you handle a situation where you had to deal with a person who is reluctant to participate in any sort of activity? And third question, they might ask you, how do you make sure, or what strategies do you use to make sure that all of your clients are engaged in an activity and they're comfortable? And also, how do you deal to make sure that environment is positive? So these are just an examples. You can search for more such questions. You have to practice all these questions to make sure that you can crack the interview, because everybody knows opportunity बार बार नहीं मिलती है, एक बार मिलेगी. You have to make sure that you are taking out that opportunity. And lastly, employer जो भी आप आंसर दे रहे हो उसके अंदर वो ये देख रहा है कि are you the person who can maintain or who can foster a positive and safe environment? So while you are giving answer, just make sure that you are showing them positive attitude. You are making sure that you are empathetic. Your
your communication skills are good, and you are the person who always tries to make everything positive and make sure that everyone is comfortable around you. And if they are sending you an email for virtual interview, so make sure your environment is quiet. Secondly, your camera, everything is set. Maintain your body structure when you sit down for an interview. And yeah, make sure that you are advanced, well prepared, because that brings confidence. Secondly is a pro tip that make sure you are ready. When you sit down, you are ready for a trial or demo activity, maybe because the interview might ask you, can you show us a demo or a trial where you are talking with the client, and how will you make sure that client is comfortable, and how will you foster a positive environment around that person or the client. And maybe they will give you a specific situation and you have to show them through a dialogue. Lastly, वीडियो कंप्लीट करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू सेकंड प्रो टिप. फर्स्ट इज़ कि आपका जब भी इंटरव्यू हो जाए, आफ्टर 5 to 10 minutes जैसे इंटरव्यू हो जाता है, द वीडियो कॉल इज़ एंडेड, यू मेक श्योर कि आप एक थैंक यू नोट भेज रहे हो उस बंदे को जिससे आपकी बात हुई है, एंड यू आर सेंडिंग हिम or her a message, a sweet message, and just make sure कि ज़्यादा बड़ा ना हो. Whatever you liked in the interview or whatever you liked in the personality of other person, just make sure you are writing 1 or 2 words about that too, and that's it. Have a nice day. That's it. After 3 to 4 days, you are making sure that you are following up, because most of the time they वो इतने ज़्यादा इंटरव्यू लेते they don't even remember. So you make sure that you are putting an impact, you are putting your 100%. बाकी जो होगा वो अच्छा ही होगा, because you have practiced well, आपने अपनी मेहनत करी है, so you will definitely get a job. That's all from my side. If you have any other question, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, comment down. Thank you.